Hello, friends. Welcome to our channel, The Literature Cabin. Today, we will discuss Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth. Lyrical Ballads is one of the most important literary works of all time. It was first published in 1798 and it was a collaborative work by William Wordsworth and S.T. Coleridge. विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा था और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1798 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ था एनोनिमसली। इसका मतलब है कि जब ये पहली बार पब्लिश हुआ तो इस पर किसी का भी नाम नहीं था, ना वर्ड्सवर्थ का ना कोलरिज का। एंड मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन द फर्स्ट एडिशन वर बाय वर्ड्सवर्थ. Coleridge also contributed, but he contributed only 4 poems, including the very famous The Rime of the Ancient Mariner. The second edition of Lyrical Ballads appeared in 1800. This edition was special because it included the very famous Preface, which we are going to discuss today, by William Wordsworth. In the third edition of 1802, Wordsworth expanded the Preface. The fourth and final edition appeared in 1805. तो सेकेंड एडिशन इसीलिए फेमस है क्योंकि इस पहली बार इस एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस ऐड किया जो कि पहले वाले एडिशन में नहीं था। पहले वाले एडिशन में एक एडवर्टाइजमेंट था. There was an advertisement in the first edition where Wordsworth warned the readers that the majority of the poems in the books are to be considered as experiments. हमें याद रखना पड़ेगा कि रोमांटिक पीरियड के पहले there was neoclassical and Augustan period. There was the age of Pope and Dryden. There were writers who believed that there is no place for imagination in literature. Literature should be based on realism, logic and reason. तो इसीलिए न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज में हम लोग देखें कि ज़्यादातर पॉलिटिकल सटायर्स लिखे जा रहे हैं, सरकाज़म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लॉजिक और रीज़न के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं है. इसीलिए पहली बार लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोइट्री के फॉर्म के साथ, जहाँ पे वो लॉजिक और रीज़न के ऊपर नहीं, वो इमोशन और फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. He declared that his purpose is to see how the conversational language of the middle and lower class men can be used for the purpose of poetic creation. हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑगस्टन और न्यू क्लासिकल पीरियड में जिस तरह की लैंग्वेज पोइट्री में यूज़ किया जाता था वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड और ऑर्नामेंटल होते थे. तो पहली बार वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हम कोई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसमें जो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, जो आम आदमी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जिस लैंग्वेज में बात करता है उसी डिक्शन को हम पोइट्री में यूज़ करेंगे. So Wordsworth mentioned in the preface that he has intentionally used the language really used by men to describe the incidents of common life. Wordsworth complained that the use of sophisticated language, the kind of language that the neoclassical poets used to use, so the use of such language in poetic creation does not add any value to the poet or his work. The diction used by common men is less artificial and less restrained, therefore much more natural and organic. So this unrestricted language brings forth feelings and emotions that become one with nature. So if the poet is able to select his subject with proper care, taste and feeling, then the resultant poetic creation would be devoid of the vulgarity of ordinary life. Rather, it will be much more beautiful and much more dignified. तो एक पोइट को कैसा होना चाहिए, ये तो गई पोइटिक लैंग्वेज के बाद, लेकिन एक पोइट को कैसा होना चाहिए. तो व्हाट इज़ अ पोइट? इसके जवाब में वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं कि ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन. एक पोइट एक इंसान है जो दूसरे इंसानों से बात कर रहा है. ही इज़ नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
The only difference is that the poet is endowed with much more sensibility, much more enthusiasm, and more understanding and knowledge of human nature than the common man has. So, the poet is a man who rejoices in the spirit of life. He finds a passion similar to his own to be present in nature, to be present in the goings on of the universe. और अगर ये सिमिलैरिटी ढूंढने में वो फेल भी हुआ तो वो उस पैशन को जो उसके खुद के अंदर है और जो नेचर में देखना चाहता है, अगर वो पैशन वो नेचर में ना भी ढूंढ पाए तो वो अपने इमेजिनेशन से उसको क्रिएट कर सकता है. Wordsworth also said that writing poetry is the most philosophic of all writings. The objective of writing poetry is to convey truth that is general and not individual. Creating poetry is to create the images of man and nature, to celebrate the relation between man and nature. It is a homage paid to the naked dignity of man, and it is also an acknowledgement of the beauty of the universe. Another thing that he said is that truth is the only companion of the poet, and it would be a wrong thing to do if the poet distorts the truth with artificial and ornamental diction. He is not a linguistic craftsman. The poet is not a linguistic craftsman who imitates nature following the rules. Rather, the poet's main aim is to understand and describe man not as a social being but as a part of nature, using as natural a language as possible. तो हम देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि पोएट्री का लैंग्वेज होना चाहिए ऐसा जो एक आम आदमी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करता है, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी डिवॉइड ऑफ द वल्गैरिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. और ये एक पोएट की ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट को कॉमन लाइफ से कुछ इस तरह सेलेक्ट करे कि कोई भी वल्गैरिटी जो कि ऑर्डिनरी लाइफ में अक्सर होती है, कोई भी वल्गैरिटी उसके पोएटिक क्रिएशन में ना हो. Rather, the poetic creation should be much more beautiful and dignified. तो पहली बार वर्ड्सवर्थ अपने ओपिनियंस बता रहे हैं लिरिकल बैलेड्स में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, जहाँ पे वो पोएटिक लैंग्वेज और पोएट के एटीट्यूड में कुछ चेंजेस लाने के लिए कह रहे हैं. न्यू क्लासिकल पोएट्स के बाद कुछ ऐसे पोएट्स आए थे इंग्लिश लिटरेरी सीन में, जैसे कि ब्लेक, काउपर और ग्रे जैसे पोएट्स जिन्होंने धीरे धीरे रोमांटिक एलिमेंट्स को यूज़ करना शुरू किया था. लेकिन ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ही था जिसके थ्रू पहली बार एक पोएट ने कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए बोला पोएटिक क्रिएशंस में. तो इसीलिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को एक लैंडमार्क टेक्स्ट के तरह देखा जाता है, which completely changed the language of poetry and which completely changed the idea of who a poet is. So this preface is considered as the de facto manifesto, as the beginning, as the official announcement of the Romantic movement in England. It was published in the second edition of the Lyrical Ballads, which is also known as the 1800 edition. So friends, if you like this video and if you find this information useful, you can like this video and share this video. Please subscribe to our channel, and if you have any suggestion, then please write that in the comment section. You can also visit our blog www.theliteraturecabin.com. Thank you so much.